Investing in the stock market can help you diversify investments and earn dividends or capital gains. But not everyone takes advantage of this. There are less than 250,000 retail investors in Pakistan. And my guest on this episode of the Misaal podcast wants to change that. His name is Shoaib Lalani. He's a co-founder at FinPocket. With FinPocket, you can discuss, analyze, and trade stocks on the Pakistan Stock Exchange. Let's listen in. Welcome to the Misaal podcast, Shoaib. How are you? I'm doing good. Thank you. Thank you for having me here. So yeah, I'm definitely excited to talk to you. I personally have interest in the financial markets, and you are doing something in the financial markets. I've seen FinPocket every once in a while come up on my Twitter feed and on LinkedIn. So I was like, okay, why not, reach out to you and learn more about you as well as what you're building. Can you please tell me a little bit about yourself and what exactly is the problem you're trying to solve with FinPocket? I started investing in trading back in 2010 when I was in my university time. I was doing bachelor's and summers ka time tha and mujhe ghar pe nahi baitha tha. I wasn't happy really sitting at home. So शौक हुआ financial derivative course करने का. मैंने कहा यार अच्छा नाम लग रहा है, derivatives है, algebra है, let's do financial derivatives then. Idea नहीं था इतना. And I did it. मैं खुशी खुशी चला गया summers के अंदर, साथ में एक project भी कर रहा था university के अंदर. And end of semester, I was, putting my head, what's the difference between futures and forwards? College, all these are same, right? It sounds same. And I was very confused by the end of the semester, right? And then, which project I was doing, saath mein, I got 25,000 rupees in that. It was a huge amount at that time, 2010. I put that money in commodities market. So I made my first trade and फिर वहाँ से समझ आने लगा अच्छा यार this is what difference between futures and forwards are, right? And then वहाँ से थोड़ी बहुत trading start की, got to know about financial market. थोड़ा time पहले financial crisis आया था. Being in Pakistan, that idea नहीं था कि financial crisis भी हुआ था दुनिया के अंदर. Yeah. So I started reading about it, started understanding कि क्या है. Then I went into equities market. Equities market में गया. I started trading, and that developed my interest. So I think by the end of the last year, I used to have the small laptop, and classes I used to be a backbencher by then, and I used to do the trading of that. And so that's, I started trading at that time. Then I started my, professional career, trading में इतना time नहीं मिला. And then, I started working financial industry में काम किया. Then I started working with Tejas Financial Services. Tech industry में काम किया, fintech में काम किया. Then came 2020. Everything was closed down. घर पे बैठे हुए थे, थोड़ा सा time मिल गया, So I wanted to do trading again. ठीक है? And मैंने अपना वो खोला, account खोला, and the journey was same as it was like 10 years ago, right? कि वो laptop पे आपने खोलना है, फिर वो आपको कहेगा कि आप Java install करो. Java install करने के बाद वो कहेगा कि यार वो security settings update karo and everything, right? Like, we are in 2010, right? And still I have to go through the same thing, same process. Kitne log invest karenge, right? Because not everybody understands ki hai. In fact, 2 saal ho gaye na, to usko COVID ko bhi 2 saal ho gaye, right? And I was sitting with someone a few days back, and he had an account with, a very big brokerage house in Pakistan. And उसके साथ भी इशू था. So he got his brokerage की टीम ने उसका AnyDesk का सेशन लिया, और वहाँ सेशन लेने के बाद फिर उसको Java इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, रीइंस्टॉल कर रहे हैं. I was like, यार, how is it gonna change the industry? पाकिस्तान में पिछले 3 साल में वही numbers हैं, less than 300,000 investors, right? And then we talk about कि यार वो investors को यार पाकिस्तान के अंदर investor education नहीं है. But at the end of the day उनके पास एक्सेस ही नहीं है, वो है ही नहीं, उनको टारगेट ही नहीं कर रहे. अगर टारगेट करे तो टेक सपोर्ट ही नहीं, टेक इनेबलमेंट नहीं है, उनके पास टेक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि जिसके थ्रू वो उनको सपोर्ट कर सके, राइट? सो दैट्स वेयर FinPocket came in, right? कि how do we make the journey simpler for anyone to start investing in stock market or start investing through former financial institutions? Basically solving a problem that a lot of people see this as a problem, and a lot of entrepreneurs have tried to solve this problem. So it's not an easy problem to solve. So what made you feel that you are best equipped
to solve this problem? Was it a co-founder? Was it the tech that you thought was like, lacking? So you were like, okay, I'm going to find the best person, best team to build this product and then launch it and see what happens. I think it was everything, right? You need to have a right team as well. You cannot do anything in this world alone. So you need to have a right team, which we had, right? Which we have amazing people, hardworking, very smart people. And then second, it's all about the mindset as well, right? कि how do you want to solve this problem? एक तो है कि यार you can keep complaining about it कि आप regulator के पास जाइए नहीं है ये नहीं है ये नहीं. And then the other thing is you figure out solutions within the regulations that are available out there. Okay, so it's all about having the right team and having that kind of mindset here. When there's a problem, there's solutions as well. And unfortunately, these are problems of that. Correct, right. So if I understand correctly, so it's possible for someone to sign up or to download FinPocket and start trading, right? Like it's not like a dummy account. Like you actually let people trade with their own money. Yeah. So what happens is कि जब आप sign up करते हैं ना, तो we just ask you for your mobile number and email address, and that आपने sign up complete कर लिया, now we give you access to demo trading. While you have access to demo trading, you have access to all the other features as well. आपके पास community का section है, you can talk to community की, क्या app, it kind of develop the trust as well कि कोई आके कहता है अच्छा ये app legal भी है या नहीं है. So they ask the community. Then they ask कि यार किस तरह से invest करना चाहिए, कौन सी companies में invest करना चाहिए. And we have seen it happening, improving over the time. पहले लोग आते थे वो पूछते थे कि penny stock में invest करें या नहीं करें, right? And लोग उनको suggest करते थे, community एक दूसरों को suggest करती थी कि हाँ परचेज कर लो 2-3 दिन बाद ही बढ़ जाएगा तो बेच देना, थिंग्स लाइक दैट. नाउ द कॉन्वर्सेशन इज वेरी डिफरेंट, राइट? कि कोई आके कहता है कि पेनी स्टॉक्स में डाल दें तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं भाई आप पेनी स्टॉक्स में डालें, अच्छी कंपनी में डालें. सो वी हैव सीन दैट हैपनिंग ओवर द टाइम्स. Throughout the app, we have been focusing on investor education throughout the app. Bite-sized courses बनाए हैं, very simple, that talks as basic as कि savings और investment के बीच में क्या difference है. Throughout the apps, to guide किया हुआ है कि for example, if an investor is taking or user is taking very risky bet, किसी stock के अंदर, particular stock के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, तो we kind of give them a recommendation as well कि this is not a good idea, you need to diversify as well. Obviously, we're not stopping them from trading or investing, but we are educating them that this is not a good idea, you should diversify as well. So these kind of things we have done throughout the app to guide and support investors, first-time investors in Pakistan through our app. And 80% of the people on our app are first-time investors, so they have never invested in stock market before. When it comes to like trading, so is it real time or is it like, people put in an order and it closes the next day? Is it like that? Yeah, so what happens is that once you get to know about FinPocket, आपने demo trading करके भी देख ली, आपने comment, then you go for account opening. So when you click on account opening, तो वो सारी जो journey है ना, जो पहले form fill करनी होती थी, 26 pages आपको sign करने होते थे and everything, that completely digitized, right? कि उसने अपना नाम, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन सब ऐप पे ही जमा करानी. जब वो ऐप पे जमा करा देगा तो विल ओपन देयर अकाउंट. अकाउंट जो है उनका एलसीसीपीएल के साथ ओपन होता है और सीडीसी के साथ ओपन होता है. सो व्हाट एवर शेयर्स यू परचेज दैट गोज टू सीडीसी, वो सीडीसी के पास जाके डिपॉजिट हो जाता है. सो वी डोंट हैव एनी एक्सेस, वी कांट डू एनी ट्रेड. वो उनकी सब अकाउंट के अंदर जाके प्लेस हो जाता है, that stays there. And then और जो ट्रेडिंग है that's real time. So वो ऐप पे आते हैं, they see the real time prices. प्राइस देखने के बाद डिसाइड किया मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी के अंदर ट्रेड करना है. सो दे पुट इन देयर ऑर्डर, ओके कहते हैं, एंड देन रियल टाइम पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है. सो इट डिपेंड्स कि ऑर्डर टाइप किया है. अगर वो मार्केट है तो रियल टाइम इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर वो लिमिट प्राइस है या ट्रिगर प्राइस है तो वो जब प्राइस ट्रिगर होगी तब वो एग्जीक्यूट होगा. बट अगेन इट्स ऑल रियल टाइम, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू PSX. देन देयर इज द स्केड्यूल ऑर्डर एज वेल. We understood that there are professionals in के पास during the market आज time नहीं होता, right? So they can place schedule order कि वो automatically next day उनके लिए 9:30 के ऊपर जो है वो execute हो जाएगा at market price. So if they want to invest, they don't want to trade and they don't want to miss out the opportunity, so they can schedule order as well. If I'm understanding this correctly, तो जब आपका जो order execute होता है, so do people have to take, for example, like 50,000 rupees and deposit that into your bank account and then it gets invested, or like how does that back end work? So what happens is कि पहले आपने cash deposit करना होता है. Before you invest, before you buy, you have to make a deposit. So deposit करने के लिए होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से, because पाकिस्तान के अंदर APIs नहीं है. And then जो payment gateway है, that's again not जो
ट्रेडिंग के लिए उसमें ये होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जो ब्रोकर का अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट करना होता है। जब पेमेंट गेटवे आ जाता है तो बीच में 2-3 लेग्स आ जाते हैं कि वो कस्टमर के अकाउंट से निकल के पहले कलेक्शन अकाउंट हो जाएगा, कलेक्शन अकाउंट से फिर वो सो वो जो है वो दैट क्रिएट्स रेगुलेटरी प्रॉब्लम। तो होता है कि कस्टमर ने बैंक ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट से टू फॉर जो ब्रोकर का अकाउंट है, उसके अंदर जब डिपॉजिट कर देंगे तो दे कैन सेंड अस अ स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट वो ऐप पे अपलोड करेंगे। जैसे उन्होंने अपलोड किया, हमें एक रिक्वेस्ट आ जाती है पीछे की, एक डिपॉजिट रिक्वेस्ट आई, वी वेरीफाई थ्रू बैंक, अपने स्टेटमेंट्स देखते हैं कि अच्छा उसमें आ गया, एंड देन वी process that deposit. Usually this journey is around within 60 minutes. I understand that's a lot of time, but because a lot of things happens manually here, तो वो जो है टाइम थोड़ा सा लग जाता है. But we try to do it, we try to process this within under 10 minutes, but sometimes it takes more as well क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने deposit कर दिया है, so it takes time as well. But usually within 60 minutes, we try to be within 10 minutes as well. कि 10 मिनट के अंदर. So जब वो ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कर लेते तो उनकी ऐप के अंदर वो नजर आना शुरू हो जाता है कि यू हैव मेड अ डिपॉजिट ऑफ 10,000 rupees or 50,000 rupees or whatever that amount is, and then they can start purchasing shares through that. और जैसे ही वो शेयर्स परचेज करते हैं तो उनका बैलेंस जो डिडक्ट हो जाता है, एंड जो शेयर्स आते हैं वो उनके अकाउंट में आ जाते हैं, एंड 2 days के बाद उनके जो शेयर्स हैं वो उनके CDC अकाउंट्स के अंदर भी आ जाता है, बिकॉज वो पूरा सेटलमेंट का पीरियड होता है T+2+. There's a lot of automation in the background. Of course, it's not as quick as possible, but there's a lot of automation in the background. So when it comes to you either you build the tech or you outsource the tech, and then you have a team that works on the tech, whatever your way of dealing with the tech is. How long did it take you to do all these things? Because it's not easy to do anything related to finance that easily. So especially in Pakistan, like you said, the lack of APIs make it very difficult to do these things the way anyone else would do in the rest of the world. Again, our fintech industry, man, you're building a financial product for people in Pakistan. You need to have your own team. You cannot outsource this. Because होता ये है कि you're continuously talking to users, right? और वो जो feedback उनसे आ रहे होते हैं, you have to incorporate that. And you have to incorporate it very fast, very quick. So you can't have an outsourced team जिसको आप पहले वो पूरा डॉक्यूमेंट बना के देख रहे हैं कि यार ये हमें करना है, ये चीज़ें करनी है, and then वो कह रहे हैं अच्छा इस पे 3 हफ्ते लगेंगे, 5 हफ्ते लगेंगे, 3 महीने. You can't have that. You need to have your own team sitting on the ground. That team was also talking to users. So that's very important, because if they don't know what they're solving, how would they know कि क्या करना है, right? Building a tech is very simple. Why you are building this tech, it's very important. So that's what we have done कि हमारे पास जितने भी डेवलपर्स हैं, और जितने भी लोग हमारे है 3 डेवलपर्स हमारे पास, we're a very small team, so we're just 6 people. So everybody in the team talks to the customer कि क्या pain point है आपका, क्या issues आ रहे हैं, क्यों आप, how did you get to know about FinPocket, why are you here, क्या pain points है, how can we solve those pain points, and focus is कि to understand the pain points, right? Not asking for features कि आपको क्या features चाहिए. We focus on solving the pain points. Very good example is कि we bring one conversation with customer and we asked him कि क्या pain points. He said कि आपकी ऐप के अंदर जो है वो technical chartings नहीं है. I was like ठीक है. हम उनसे पूछा कि आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में बताएं, who you are, what you do, कितना टाइम से आप इन्वेस्ट करें, everything. He said मैंने अभी जो है ना 1 महीने से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया. ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? तो ये सेट कि मेरी छोटी मोटी दुकान है और मैं आपकी ऐप के थ्रू ट्रेड करना, तो मुझे जो है वो टेक्निकल चार्ट में तो उसमें मसला होता. ठीक है, हाउ डू यू डू द टेक्निकल चार्टिंग एट दिस मोमेंट? एंड ही वाज लाइक कि मैं जो है वो investing.com पे जाके ना वो चार्ट्स देखता हूँ वहाँ पे. मैं कहा ठीक है, एंड देन आई आस्क्ड कि अच्छा वहाँ पे आप किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं? ये सेट कि वो चार्ट के नीचे ना एक लाइन होती है, उसमें लिखा होता है RSI कितना है, वो सारी चीज़ें क्या है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, 30 है 70 है. सो दैट वाज हिज पेन पॉइंट कि उसको 30-70 नहीं मिल रहा. इट वाजंट द पेन पॉइंट कि उसको टेक्निकल चार्ज चाहिए एंड एवरीथिंग, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्या पेन पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज द बायस वाज इन आवर माइंड वाज कि वी आर टारगेटिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स. ठीक है, वी बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 10 years, आज तक हमें टेक्निकल चार्टिंग समझ नहीं आई. ये जो नया बंदा है वो आके क्यों टेक्निकल चार्ट पूछ रहा है, राइट? And that was the pain point. Yes, the pain point is not the technical chart, it's the number, it's the RSI कितना है, level, ये सारी चीज़ें. And if you build that, you solve that problem. So that kind of a mindset, it needs to be there. And and a lot of things have been automated in Pakistan as well, other than this payment part.
बाकी जो PSX की जो अकाउंट ओपनिंग जर्नी है, द ट्रेड एग्जीक्यूशन जर्नी है, उसके बाद जो सेटलमेंट की जर्नी, दैट्स ऑल ऑटोमेट. कस्टमर को कुछ भी नहीं करना होता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती है ऑल टाइम एंड एवरीथिंग. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ऑटोमेटेड. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट रेशियो एज वेल. वी गॉट कस्टमर्स फ्रॉम 210 cities in Pakistan. ठीक है. आई अंडरस्टैंड कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या टॉप 2 टियर सिटीज़ के अंदर तो आपकी बैंक्स अवेलेबल है, राइट. अगर आप दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे विलेजेस या टाउन में जाते हैं, तो वहाँ पे बैंक्स भी अवेलेबल नहीं. एंड दोज पीपल वांट टू इन्वेस्ट, दे हैव द मनी, दे हैव द स्मार्टफोन एज वेल. आपकी जो है 3G 4G की पेनिट्रेशन भी अब तो गाँव के अंदर भी आ गई है. सो दे वर लाइक कि हमारे पास ऐप भी है, आपकी ऐप भी इंस्टॉल करनी है, हमारे पास पैसे भी हैं, हमें इन्वेस्ट भी करना है, बट हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है. तो वी टोल्ड देम कि अच्छा नहीं है तो आप जाके इजी पैसा अकाउंट खोल लो, इजी पैसा जैस कैश अकाउंट खोल लो, दैट्स आल्सो बैंक अकाउंट, राइट. डू यू हैव अ रिटेलर नियर बाय? हमारा रिटेलर भी है हमारे पास. उनका बेस्ट है, आप जाएं अपना इजी पैसा अकाउंट खोलें, पैसे डिपॉजिट करें, वहाँ से ट्रांसफर कर दें, देयर यू गो. PSX के टाइम उस टाइप पे PSX जो रिक्वायरमेंट थी अकाउंट ओपनिंग करने की थी कि जस्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, ठीक है. अब उस पर क्लैरिटी नहीं थी कि वॉलेट इज ऑल्सो बैंक अकाउंट. वी अंडरस्टूड कि वॉलेट इज ऑल्सो बैंक अकाउंट. तो फिर जो आके हमने PSX को बताया कि यू नीड टू ऐड वॉलेट एज वेल, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो यू कांट जस्ट बी ऑन कि आपने सिर्फ वॉलेट पे ही अपना मोबाइल अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर ही आपके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो. टू हैव वॉलेट्स एज वेल. सो नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, दे हैव अपडेटेड द लॉज एज वेल कि वॉलेट्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स बोथ रेगुलेटर्स एंड private institutions हैं जो our players हैं, they also need to work very closely together, because regulator की कोई limited capacity, they don't go and talk to the users of it, they talk about the overall thing. जो private sectors हैं, जो private institutions हैं, players like FinPocket or other players, they are the the here or are the representative of the customers. So they need to work very closely with regulators. Keep ye pain points hai. This is how we can solve it, rather than going to regulator and complaining कि अच्छा यार वो जो पटोकी के अंदर कस्टमर बैठा है उसको वो ट्रेड नहीं कर सकता, हम क्या करें, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. And that's not the right mindset. It's all about mindset thing. That's why FinPocket exists. Sounds good. So you already talked about the team. So is it safe to assume here that you are bootstrapping this? You have not raised any outside funding? We have done fundraising. We did an angel round, a very small amount. And the idea with that amount was to build an MVP product. To see कि यार लोगों को ये नीड भी है नहीं है, जैसा हमें ये हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान में लोगों को ये हीट चाहिए. So the idea was to build the product, get to the product market fit, and then we'll start scaling. So अभी तक जो हमने पिछले 2 साल के अंदर काम किया है, that's continuously we are iterating our product, figuring out कि कहाँ pain points हैं, कहाँ journey drop out हो रही है, कहाँ customer को issues आ रहे हैं, and we are solving those pain points. For example, customer आ गया, पटोकी से एक customer आ गया या लाड़खाना से एक customer आ गया, and उसके पास पैसे भी है, digital account opening भी होगी, onboard भी हो गया, पैसे भी डिपॉजिट कर दिए. नाउ इज़ लाइक यार मुझे जो है वो ये नहीं पता कि कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज के अंदर ट्रेड करना चाहिए. सो वी लाइक ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गाइड यू विद रेडीमेड पोर्टफोलियो, या रेडीमेड स्ट्रेटजीज, या रेडीमेड थीम्स जो आपको समझ आ सकते हैं, राइट. सो यू अंडरस्टैंड कि हाउसिंग बूम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. उस टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट ने नया हाउसिंग स्कीम निकाली थी. सो एक हमने थीम बनाया कि हाउसिंग बूम का फ्लो बना, राइट, कि कौन सी कंपनीज हैं जो इस हाउसिंग बूम से बेनिफिट उठा सकती हैं. सो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, या सीमेंट कंपनी है, ग्लास कंपनीज है जो ग्लास मैन्युफैक्चर कर रही. सो हमने उस कंपनीज को क्लब किया और उस थीम के अंदर था. दैट वाज आवर फर्स्ट आइटरेशन, एंड वी स्टार्टेड सीइंग दैट स्टार्टेड हेल्पिंग कस्टमर्स कि अच्छा दिस इज हाउ वी शुड लुक एट द कंपनीज एंड एवरीथिंग. द नेक्स्ट आइटरेशन विद देन इट्स उसका हम थोड़ा सा ऑटोमेट कर दे कि अच्छा आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बट मुझे इंडिविजुअली जाके इन्वेस्ट करना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो हमने उसको एक पूरा पोर्टफोलियो के अंदर क्लब कर दिया कि ये कंपनीज है, उनका ये रेशियोज होगा इस अमाउंट के अंदर, एंड वी मेड इट वेरी फाइनेंशियल इंक्लूसिव. सो वो पोर्टफोलियो जो है वो रादर देन 25,000 या 50,000 से इन्वेस्ट हो रहा है, वो हमने स्टार्ट किया 1,200 रुपये से, कि 1,200 रुपये में यू हैव 4-5 डिफरेंट कंपनीज. उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो गया है. You started investing in very good companies as well. So that kind of, things that we have done over the last 2 years to understand कि क्या-क्या pain points and what fix
keep iterating our product throughout to understand कि यार किस तरह से हम इसकी journey को simplify कर सकते How many so you haven't raised much money yet, so I'm thinking like you also have like a benchmark in terms of like we currently have this many users, so how many users do you have right now, and what is like the next like next milestone that you're going after? हैं. We have around 1,500 customers so far. ठीक है, we're actively investing through our platform, and we didn't do active marketing till this date. The idea was to let it grow organically, figure out pain points kya hai. Once until we don't achieve product market fit, it doesn't make sense to go and scale. Because होगा ये कि आप marketing करेंगे, customer आएगा, because you haven't achieved product market fit या उसके आप एक pain point solve नहीं किए तो they'll start dropping out. We were very clear on that कि जब तक product market fit नहीं होता, we'll not start scaling. So now we understand कि जब हर एक customer convert हो रहा है, doing organically with core month on month. Retention rate hai, conversion rate hai. So we understood that now it's time to scale. Everything is jo pain point journey hai, frictions hai, wo reduce honge better. So now we are going for funding round. I understand it's a very bad time in the market. Yeah. But we're very hopeful. The next thing that we want to do is we want to become the largest platform in Pakistan for retail investors, that when they have to invest or what they think about investing, FinPocket is there for them. We started with equities because when we started equities, was time pay was had the most technology enabled. Other industry mutual funds वगैरह उस time पे के पास अपनी खुद की technologies हैं कि और if आप open approve किया था. Recently they have started opening up integrations की अपने आप का digital onboarding लेके आए. So now we're going into mutual funds as well. We're talking to 2 largest EMCs as well as we speak. So idea is कि एक ही platform है जहाँ पे आपकी सारी financial needs पूरी हो रही है, investment करनी है आपने, fixed income में डालना है आपने, stocks के अंदर डालना है. You have one platform जहाँ जिससे through आप सारी चीजें कर सकते. And the idea is to become the largest player, and we're looking to add between 500,000 accounts in next 2 years. No, sounds good. Sounds good. I mean, this is all ambitious because I personally think, because startups, when they raise money, right? So one of the venues for a startup to exit is through IPO. And if the capital markets in Pakistan don't improve in the next decade, I mean, I would say decade because 5 years is a very short period of time. I would say I would want to see the capital markets in Pakistan improve, and the way it improves is, of course, you bring in a lot more people who are investing in the stock market compared to the typical real estate in the Plotistan, right? So it's better that this is happening, and people like you, FinPocket, I know there are a couple of other players doing these things to increase the inclusion. So it's beneficial for you because the pie gets bigger, makes it easy for you to justify charging money, or however you plan to eventually start making money through this. So this is all good. So just out of curiosity, when people sign up, do they ever ask you like why they can't invest in, like, for example, Apple or Microsoft? Very small amount of people are asking कि हम global stock में कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Unfortunately, Pakistan वो journey बहुत difficult है, right? No. क्योंकि आपने के पैसे यहाँ से मुझसे बाहर भेजने हैं तो you have to go through state bank पर approval लेनी है सारी चीज़ें. आज तो हो गया business जो अपने कह रहे हो कि LCC open हो रही थी. So it's very difficult, right? So that's why we did not focus on global market. So Pakistan की local market ही जो है वो इतनी बड़ी है, it's very untapped right now. So if we focus on this Pakistani market, it's a very big opportunity. Obviously, there are small players, there are players like that who are doing क्या Pakistan से कर सकते हैं, different तरीके से figure out करके, but वो scalable model नहीं है. So that's why we didn't focus on that. You mentioned कि हम लोग properties में डाल रहे हैं, and the reason you लोग property में डालते हैं, it's easy. वहाँ पर उसको नहीं कहता कि यार आप जो है वो ये करें वो करें, इसकी वेरिफिकेशन करें वो करें, वो सारी चीज़ें. It's accessible. People can see it. Because they can see it, they can understand it, and they will invest in it, right? Stock market में, I'll talk about the majority of brokerage houses. उनकी ऐप का एक्सेस आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपको अकाउंट खोल लिया उनके साथ, right? So you cannot even see, feel, as a user, as a retail user, if you can't feel it, if you can't see it, you won't put your money in, right? Because you want, that trust will not be there. Crypto के अंदर जो है वो पाकिस्तान में से 1 million people are investing in cryptos, ठीक है, compared to PSX 3 lakh customers. And the reason is कि it's accessible. आप पूरी apps पे जाएं और easily आप तो
email address डालें, and you get this, you see the market, right? Price ऊपर नीचे हो रही है, graph देख रहे हैं, all these things. And then when you have to invest, आपने simple अपना card डालना है and you start trading. So the journey is very simplified. That's why, Pakistani people are flocking to these risky assets, despite कि वो पाकिस्तान में banned है, Binance banned हुआ है, OptaFX banned हुआ है, but people are still flocking, right? And the reason is easy. It's nothing to do with, कि यार वो समझ नहीं है या वो crypto के अंदर bull है, the gains are there. If you talk about like last 2 years, crypto to 50-70% जो है वो down लगे, but people are still going there, right? It's all about the access. It's all about easy access. And if we do the same thing in the Pakistani market, so the Pakistani capital market as well, you will see the same result. It's all about access. We are getting customers without marketing for 210 cities. It shows कि उनको access चाहिए, उनके पास पैसा है, उनके पास इंटरेस्ट, ठीक है, वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी है कि किस तरह से कंपनी को एवैल्यूएट कर रहे हैं, वो तो वो टाइप बन होगी, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल out there who are working on this idea कि financial education पे काम करें, but it will take time, right? But the thing is कि you need to start somewhere, and start is how do you provide easy access to this customers? I think you touched on this a little bit earlier, that you want to be the biggest platform in Pakistan. So I wouldn't ask you so it's a great North Star metric. But in the short run, I know you want to eventually start raising money, or even right now you want to start raising money. Like in the short run, are you looking to build the product more, or are you trying to figure out if you have reached product market fit, it's time to scale on the tech side? Which is which way are you leaning towards? It's gonna be a continuous product, right? It's gonna be continuous iteration. It's not like हमने ये build कर लिया है and now it's good, or let's just acquire customer. And I think it's gonna be continuous, because जैसे जैसे customers आते जाएंगे, new pain points आते जाएंगे, you have to figure out different ideas. You need to figure out और क्या pain points हैं और क्या journey. For example, we're expecting Rust payment to merchant to peer वाला module to come live. जब वो live हो जाएगा तो उसकी इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन होगी तो फिर उसके अराउंड जो है डिफरेंट यूज केसेस क्रिएट होंगे कि हाउ डू वी सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट जर्नी एज वेल. केयर पाकिस्तान के अंदर आज तक ऐसा भी प्रोडक्ट हुआ है, राइट, that automatically deducts money from your account and invest for you automatically. Despite the fact कि पूरी दुनिया की global markets और global equity markets are underperforming, India की market is growing every month. Weekly is touching high new highs, right? And the reason is कि वो एक तो people are coming online, ठीक है, वहाँ पे अच्छे खासे startups है, similar startups and that coming online. And दूसरा वहाँ पे ऐसा भी प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं, राइट. सो दैट्स काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली वो चल रही चीज़ें पे वो स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करी. पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें ही नहीं है. सो once we start growing, once we start immediate plans to continue iterating, because it's a continuous process. It's not one time कि बना ली अब उसको just चलाते रहे अगले 5-10 साल तक and then probably FinPocket को भी आके replace करें. So it's not like that. You need to keep iterating, you need to keep evolving, you need to keep figuring out कि customer needs क्या है. One last question before I let you go. So from what you're talking about, it seems like, there is a lot of tech involved, right? So within the tech, is there a product that you wish some other startup was building, or you wish there was out there in the market already? Payment is something where, was still a problem, right? And the idea is to not reinvent the wheel. Let the payment players, Pakistan में अच्छी खासी payment players आ गए, सादा पे, नया पे, and let them work on it, and we'll integrate with them. Once we are there, once gateway वगैरह आ जाता है, RAS वगैरह आ जाता है, we'll let them innovate on that, and we'll just partner with them. So we are strong believer कि payment को आपको जो है वो reinvent करने की जरूरत नहीं है, and let the use the existing infrastructure and work upon it. Thank you so much for taking out the time and being on the Misaal podcast. It's lovely to see you talk about the FinPocket, as well as tell me how the journey has been so far. It sounds like you're doing great, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you for having me here. Thanks for listening to the Misaal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.